which is important according to the viewpoint of exam. Let's see. Okay, let's start with the first, that is, okay. The Rhymers Club was a group of London poets जो फॉर्म किया था W.B. Yeats and Ernest Rene in 1890 में. They gathered in pub and the coffee houses to read their verse and discuss the poetry. To aim lyricism, then artistic refinement of the time. Victorian poetry seemed exhausted, so the informal club published two anthologies. First, the Book of the Rhymers Club 1892 and the second Book of the Rhymers Club 1894. So which feature? इसका feature था by Yeats, then Lionel Johnson, Ernest Dowson, Arthur Simon, Richard Lee Gallion. Many of its members were associated with the Decadent and Symbolist movement. Okay, so French poetry and aesthetics is there and short-lived. The Rhymers Club helped launch the Yeats career. So these are the members of the Rhymers Club. Rhymers Club के member Yeats थे, Arthur Simon, Richard Lee Gallion and the Ernest Dowson. Second आता है हमारा Irish Dramatic Movement. Irish Dramatic Movement को ही हम Irish Literary Revival भी कहते हैं. The Irish Dramatic Movement also called the Irish Literary Revival, जो फ्लरिश हुआ था लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में. वो कंबाइन करता था नेशनलिज्म विद द आर्टिस्टिक रेन्यूअल. इट sought to create the distinctly Irish literature rooted in the folk. And the central to the movement was the Abbey Theatre in Dublin, founded in 1904 by the W.B. Yeats. Abbey Theatre जो Yeats ने 1904 में एस्टेब्लिश किया था. लेडी ऑगस्टा ग्रेगरी एंड द जॉन मिलिंगटन सिंजे और जेम्स सिंजे, जिनका राइडर्स टू द सी फेमस वर्क है. Yeats brought the visionary symbolism to the drama. So the Lady Gregory contributed to the Floquart-based plays. Singe shocked the audience with the playboy of the Western world. Other key figures are there. So the Lady Gregory, W.B. Yeats, George Moore and the Eden Martin and the Singe. Then आता है हमारा Arden Group. Arden Group, also called the 30s Poets, was the circle of the British writer. ये British writer का circle था जो एक्टिव हुआ था 1930 में. वो combine the political commitment with the poetic invention, जिसमें Arden आते हैं, group leader Stephen Spender आते हैं, Cecil D. Lewis आते हैं, Louis MacNeice आते हैं. They were influenced by the Marxism, psychoanalysis and the cries of the age fascism. So the poetry blended the intellectual as well as the social consciousness. Arden's early poetry, like the Spain, exemplifies the blend of the politics and the modernist. So इस group के member कौन कौन आते हैं? W.H. Arden आते हैं, Louis MacNeice आते हैं, Cecil D. Lewis आते हैं, Stephen Spender, Christopher Isherwood and sometimes Edward Upward and the Rex Warner also. Then the important poets, Georgian poets concept. The Georgian poets were the loosely defined group of English poet. वो एक्टिव होते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में. इसका नेम रखा गया था आफ्टर द किंग जॉर्ज फिफ्थ. उनका वर्क इनमें पब्लिश होता था, सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज में आता था बिटवीन 1912 to 1922 एंड एडिट करते थे उसे एडवर्ड मार्श. Georgian poetry was marked by the traditional form, rural themes. Then the romantic sensibilities में होती थी. The beginning of the prominent member इसके थे Rupert Brooke, celebrated for his war sonnet, Walter D. Moore, John Masefield and the Sassoon. ओके, और इनके अगर हम इम्पोर्टेंट जॉर्जियन पोएट्री की बात करें तो उसमें इजरा पाउंड, टी.एस. इलियट आते हैं. ओके, देन इसके ये जो है फेमस ग्रुप मेंबर्स जिसे हम कह सकते हैं, रूपर्ट ब्रूक से इंक्लूडिंग द अदर. Then the Harlem Renaissance. Harlem Renaissance was a vibrant African American cultural movement था. Harlem Renaissance important भी माना जाता है क्योंकि ये अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर मूवमेंट राइज हुआ था 1920 to 1930, centered in the Harlem, New York City. It celebrated black identity, creativity and resilience while changing racial stereotypes and advocating social equality. In literature, the movement produced poets
इस लिटरेचर की जो ये मूवमेंट, इसने हमें बहुत सारे पोएट्स दिए, नॉवेलिस्ट दिए, एसेस दिए, जो अपनी थीम्स, कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर करते थे, तो रेसिज्म को दिखाते थे, हेरिटेज, म्यूजिक एंड अर्बन लाइफ को। लीडिंग इसके फिगर माने जाते हैं हार्लेम रेनेसा के लॉन्गस्टन ह्यूजेस से, जैज इंस्पायर्ड पोएट्री उनकी। देन द ब्लैक लाइफ, क्लॉन मैक्के, ऑथर ऑफ हार्लेम शैडो, काउंटी कूलिंग, and the prose writer like the Zora Neale Hurston, their eyes were watching God. The movement was deeply influenced by the jazz, blue and the folk tradition. इसके मेंबर्स जो आते हैं वो लैंगस्टन ह्यूजेस आते हैं, जोरा नेल हर्स्टन आते हैं, काउंटी कॉलिन आते हैं, क्लॉडी मैके आते हैं, जेसी रेडमन आते हैं, फॉस्टर्स, जीन टॉर्मर एंड द नेला लार्सन। देन हम बात करेंगे वॉर पोएट्स की। वॉर पोएट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर प्राइमरली टू दोज हु रोट अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर occurs in 1914 to 1918, exposed the horror, disillusionment, trench warfare. Their poetry rejected the patriotic glorification of war, and उनकी poetry replace करती है stark realism को, irony को, pity को, and soldiers' condition को। Wilfred Owen became the most celebrated with the poems like the Duels of Dickerum East and the Anthem for the Doomed Youth, which condemned the waste of young lives. Then the Seyfried Sassoon wrote the satirical work and the angry poems criticizing the general politics. Okay. Then the soldier, other include the Isaac Rosenberg, Edward Thomas, collectively other the war poet. So war poet के members के हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं ससून है, ओवेन साइफ्राइड है, रिचर्ड है, लॉरेंस, देन द एडमंड ब्लंडन, रूपर्ट ब्रूक, जुलियन ग्रेनवेल, आइवर ग्रांडे विल्फ्राइड, गिब्सन एंड रॉबर्ट ग्रेव्स। Then talk about the lost generation. When we talk about the lost generation, okay, when we talk about the lost generation, describe the group of American writers who came of age during the World War I. There was the disillusion by its devastation and shallow materialism. The term was popularized by the Gertrude Stein and later adopted by the Ernest Hemingway. The sun also rises me. The writer often depicted the character who were rootless, alienation. After the First World War, there is a condition of the realism is there, searching for the meaningful life in fractured world, the destruction all war, and the central figure इनके माने जाते हेमिंगवे। अगर हम उनका फेमस वर्क देखें फेयरवेल टू आर्म्स, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। देन एफ स्कॉट फिजराल्ड, द ग्रेट गैट्सबी, जॉन डॉस पॉज एंड द एजरा पाउंड, though he later around Stein's salon, their work combined the modernism, experimentation with the themes of loss, futility of life, and search for the new values and disillusioned age. So the famous इसके मेंबर्स है एफ स्कॉट फिजराल्ड, गर्ट्रूड स्टेन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, टी.एस. एलियट, इजरा पाउंड, then Jean Ray Henry, Strater and Silva, and the Bench. Okay. Then Bloomsbury group आता है. Bloomsbury group was influence circle of the intellectual, writer and the artist active in London. Bloomsbury district early 20th century में आकर होता है. They were known for their progressive politics, rejection of the Victorian morality को reject करते and emphasize करते personal relationship and artistic freedom में. The group include the novelist Virginia Woolf, E.M. Forster, economics John Maynard Keynes, biographer Leighton Scarlett, the painter Vanessa Bell and Duncan Grant. So the famous इनके मेंबर की हम बात करें तो क्लाइव बेल, लेनॉर्ड वुल्फ, Section Sidney, Turner, Foster, John Maynard, Keynes, Duncan Grant, and the Roger Fry. These are the famous ones. Then the famous concept, that is stream of consciousness. Stream of consciousness is not a group but a literary technique closely associated with the modernism. It attempts to represent the continuous flow of thought, feeling, like the ingoing process, the mind of the author, a character's mind, often reading conventional grammar for narrative order. The technique aimed to capture the inner working of the consciousness as realistically. It was the famous technical literary technique
टू डिस्क्राइब इसको पॉपुलराइज किया था जेम्स जॉयस एल्यूसिस. इसके प्रैक्टिशनर माने जाते हैं जेम्स जॉयस, स्पेशली द एल्यूसिस में. देन आते हैं हमारे फेमस फीमेल ऑथर वर्जीनिया वुल्फ, उनका मिसेस डॉल्वे. इनके जो मेंबर्स है वो है वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम फुकनर, विलियम जेम्स, डोरेथी रिचर्डसन, हेनरी जेम्स, then Marcel Proust and Jack Corda. Then Black Mountain Poet. Black Mountain Poet were the group of mid-20th century American poet associated with the Black Mountain College in North Carolina. एक एक्सपेरिमेंटल लिबर्टी आर्ट स्कूल, वो एम्फसाइज करता है प्रोजेक्टिव वर्स पे. ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स ऑल्सन ने. ओके, तो चार्ल्स ऑल्सन जो है. देन रॉबर्ट डंकन एंड देयर पोएट्री वाज एक्सपेरिमेंटल फ्री वर्स बेस्ड ऑन द ऑफन एंगेज. देन द रॉबर्ट कर्ली आते हैं, रॉबर्ट डंकन, हेलिडा मॉले, चार्ल्स ऑल्सन and Jonathan William and John Wenner. Then next is that new apocalyptics. Okay, new apocalyptics. New Apocalyptics was a group of British poets in 1940 who reacted against the cool detachment of the modern poetry. Especially जो T.S. Eliot and W.H. Auden है, instead by favored passionate, visionary and often surreal verse, drawing inspiration, romanticism, myth, consciousness. Their work appeared in the anthologies. New Apocalypse जो है, New Apocalypse 1939 gave the group in its name. इस वर्क से ही इस ग्रुप का नाम दिया गया. की पोएट्स इनमें इंक्लूड होते हैं डायलन थॉमस जिस तरह से पोएट्री लिखते हैं, हेनरी टेरेस, जॉर्ज बार्कर, डेविड गैस्कोन. देयर पोएट्री ऑफन एम्प्लॉयड रिच इमेजिनरी, ड्रीम लाइक सीक्वेंस एंड एक्सेट्रा. न्यू एपोक्लिप्स केप्ट अलाइव एट द विजनरी ट्रेडिशन. तो इसके मेंबर्स कौन से हैं? जेएफ हेनरी टेरेस, डायलन थॉमस, नॉर्मन मैकिट्स, जेम्स फिनले, जॉर्ज बार्कर, हेनरी टेरेस, वेरेन वॉकटिन, नॉर्मन मैकिस एंड डोरियन क्विप. देन सदर्न एग्रेरियन आते हैं हमारे. सदर्न एग्रेरियन were the group of American writer and intellectual based in the South during the 1920 and 1930. वो डिफेंड करते हैं ट्रेडिशनल एग्रेरियन वैल्यूज को अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ इंडस्ट्री. मतलब इंडस्ट्रियलिज्म के फेवर में नहीं है वो डिफेंड करते हैं ट्रेडिशनल एग्रेरियन को मॉडर्न कैपिटलिज्म के बदले में, विच दे बिलीव वेर इरोडिंग कल्चरल एंड मोरल स्टेबिलिटी. ओके, सो हियर डोनाल्ड डेविडसन, John Cloud, Fletcher, Henry Blue, then Kellen Liner, Andrew Nelson, then Herman Clarence. These were the Lawrence Losley and John Crow Ransom also. So J.C. Ransom, Alan Tate, Donald Davidson, Robert Penn Warren. These were the famous or the kind of a belongs to the Southern Agrarian. So this is how the today's kind of a movements we took in short only the modern age.